Hi everyone, welcome to Tarot Arc. This is Anandita. Thanks a lot for joining in today's session. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक रीडिंग करने वाली हूँ टू लेट यू नो आपकी सिचुएशन में येस या नो है. जो भी आपकी सिचुएशन में आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके मन में है जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए, दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू. प्लीज़ रिमेंबर कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आपके सामने आएगी द रीडिंग इज मेंट फॉर यू. इसके साथ कोई भी टाइम पीरियड अटैच्ड नहीं है. ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर इस रीडिंग को फॉलो करिएगा, अदरवाइज डू नॉट फोर्स द रीडिंग अपॉन यू. Also, there are a lot of other yes or no spreads that I've done in the past. You can check out those if you feel that this reading is not appealing to you. यहाँ पर मैंने 3 piles बनाई हुई हैं. This is pile number 1, the Rider-Waite Tarot deck. This is pile number 2, the Art of Tarot deck. And this is pile number 3, the Mystic Monday Tarot deck. You can see the decks. I'm not using crystals today since I'll be mainly using my 3 decks. It's going to be a yes or no spread. Maximum I might give you guidance. Depending on your situation, I might give you guidance from my angel cards. That's my angel deck. Only if I feel that you do need guidance in your situation, I will open the cards for you depending on what the situation is. So please think about your situations. Please choose your spread. Please choose your piles wisely. अपने questions या अपनी situation सोच के अपना question frame करिएगा. Try and frame the question जिसका answer आपको yes or no में मिल जाए. Then you can choose the piles and I've mentioned the timestamps in the description box. I will see you when you're at your pile. So आइए देखते हैं people who've chosen the Rider-Waite Tarot deck. What is in store for you? आपकी situation में what is the answer? Is it a yes for you or is it a no for you? People who have chosen pile number 1, let me tell you, हो सकता है आप अपनी सिचुएशन में काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है स्पेशली फॉर अ रिलेशनशिप, मे बी आपकी सिचुएशन में 3 पार्टी सिचुएशन चल रहा है या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि है आपकी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मुझे दिखाई दे रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट लेट मी टेल यू, आपका आंसर इज़ अ नो. सो अगर आपने ये पूछा है इज दिस द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप. अगर आपने मुझसे ये पूछा है इज देयर अ 3 पार्टी सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप, देन नो, इट्स नॉट अ 3 पार्टी सिचुएशन. अगर आपने मुझसे ये पूछा है इज माई हेल्थ इशू अ सीरियस वन, then no, it's not. So whatever your question is, depending on that, the answer for people who've chosen pile number 1 is a no. Also what I can say is that यहाँ पर आपकी आंसर जो भी आपकी सिचुएशन है, दिस इज नॉट द एंड. अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में है, जो कि मैं देख सकती हूँ दैट देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इसको द एंड सोच के चल रहे हैं, इस ब्रेकअप को या इस एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू दैट देर इज अ न्यू बिगिनिंग बट देर आर डिलेज इन योर सिचुएशन. एंड यहाँ से आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है. देर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड्स. Whatever your situation is, there is a big change coming your way, a big change for people who've chosen pile number 1 and a positive new change. आपकी situation में maybe 2 months लग सकते हैं but the change is there. अगर आपने पूछा है इज दिस द पर्सन द राइट पर्सन फॉर मी, इज दिस पर्सन द पर्सन फॉर मी, और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा था देन नो, दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. एंड रिमेंबर द न्यू पर्सन or a better person or somebody who is meant for you will come. So please do not lose hope because I can see that अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा था जहाँ से आपको निराशा हुई है, so let me tell you, ये वाला चैप्टर जब आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, which is going to take about 2 months from now, I do see a new beginning on the cards. Yes, it's definitely a new beginning. That's the Sun card, which clearly shows me growth, new beginnings, new opportunities after a long stressful time, after a lot of dullness. जो कि मैं आप देख सकती हूँ कि struggle आपकी लाइफ में चल रही है, dullness चल रही है, but the divine presence is clearly there. That's the Hermit. So divine intervention, divine mystic intervention is on the cards, but ये सिचुएशन अभी आपके लिए नो है. इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट टेक some time off, become a leader in your situation, get the power, get the position, and
टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। तो जो आपकी लाइफ में भी रुकावटें चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि रुकावटें हैं, एंग्जाइटी है, बट आप हार मत मानिए। दिस is not the final end. You need to work towards a new beginning, or this will get renewed, but you need to get back the passion. You need to trust the renewed energy, a renewed thing. So again, आपकी लाइफ, लव लाइफ और करियर में एक रिन्यूअल आ रहा है। सो जो भी आपका क्वेश्चन था, डिपेंडिंग ऑन दैट आंसर आपका नो है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस यू आस्क्ड। I have given you a lot of examples about the questions, but जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है वो ये है कि या तो ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, या एक न्यू solution या एक न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो वट एवर इट इज द सिचुएशन, योर सिचुएशन, यू हैव अ विन-विन situation. You are going to have success in your situation. Maybe delays are there, maybe problems will occur. For a lot of you हो सकता है 4 months भी लग जाए, from 2 months to 4 months it might take, but it's worth the wait, it's worth the effort. And फिर से बोलूंगी, अगर आपने मुझसे ये पूछा था कि is this breakup the final end, so no. For people who've chosen pile number 1, the attraction between you and your person is there. और अगर आपने ये पूछा था कि this person will we get into a reconciliation, और अगर आपका आंसर no निकला है, तो remember that a new person, a new energy is on the cards for you. So something that you can wait for, something to be happy about for people who've chosen pile number 1. So with that, I take your leave with a no for people who've chosen pile number 1. I'll be coming back with more such readings for you. Please let me know in the comment section ये अगर आपके लिए रीडिंग रेजोनेंट थी या नहीं थी, whether it was beneficial. Let me know your comments and feedback. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक. What's your situation? Is it a yes or a no in your situation? क्या चल रहा है और कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं. So for people who've chosen pile number 2, at this point in time, जो भी आपकी situation है, I can see a lot of confusion on the cards. First of all, कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ चूज करनी है जिसका आप आंसर नहीं ले पा रहे, मे बी चीज़ें अभी स्टैगनेंट हैं. द आंसर फॉर यू इन दिस सिचुएशन इज अ येस. वट एवर योर क्वेश्चन वॉज, उसका आंसर इज अ येस फॉर यू. यू नीड टू जस्ट कीप अप योर fire in yourself, determination रखिए. Will you and your person get married to each other? Yes. Is this the right person for you? Yes. Relationship के लिए definitely it's a wonderful pile. So आप और आपके person, will you get back to your person? Yes. Is this job the right job? Will you get the job for you? Waiting period is there in pile number 2, but आपकी ये सारी वेट खत्म हो जाएगी. It's worth the wait. A new beginning is on the cards for people who've chosen pile number 2. आपको एक डिसीजन बनाना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था और मैं आपको फिर से कह रही हूँ, that ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, that whatever decision you take, it's for your betterment. Things are coming under your control within the next 4 months. There could be a struggle going on, but this struggle will give you the best. This struggle will end in the next 4 months. You will get the financial help that you need. You will get the help that you've been waiting for. अगर आपने ये पूछा है, will your families agree for you and your person, or will you get that loan financially, whatever, the answer is a yes. And again, people who've chosen pile number 2, आपके काम बन रहे हैं. अगर आपने कहीं से हेल्प मांगी थी, वो आपकी हेल्प हो जाएगी. सोशल अप्रूवल, सोशल रिवॉर्ड, अवार्ड, जो भी आपके काम रुके हुए थे, क्रेडिट, आपने इतनी मेहनत करी कि आपको क्रेडिट मिलेगा इस चीज़ का. विल यू गेट द गेन्स ऑफ दिस? येस, डेफिनेटली इट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ऑल योर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, ऑल योर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी एक्नॉलेज्ड. 2 से 4 महीने का टाइम ज़रूर है फॉर द बैलेंस टू कम इन योर लाइफ, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं. बट येस, इट्स डेफिनेटली वर्थ द वेट. अगेन कहूँगी, इट्स वर्थ द एफर्ट. यू विल डिजर्व, यू डिजर्व द बेस्ट एंड यू विल गेट इट. तो अभी अगर चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कीप पुटिंग इन द एफर्ट. Reconciliation is on the cards for you. Meeting your person is on the cards for you. Will your ex come back? Yes, your ex will come back. That is also on the cards for you. Trust your intuition. Celebration is on the cards. Your efforts, again, your efforts are going to give you a lot of reward. Miracles are on the way. People who've chosen pile number 2. एंड जो आपने ये एक कन्फ्यूजन आपके मन में चल रही है, आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को वे करिए, बिकॉज आंसर इन दी एंड जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा. सो अगर आपने ये पूछा है तो ये जो मैं डिसीजन बना रहा हूँ या डिसीजन बना रही हूँ, एम आई ऑन द राइट ट्रैक,
then yes, you are on the right track and it's backed by the Almighty, it's backed by the divine plan. आपके लिए success is on the cards, victory is on the cards for you. So do not hold back. It's clear in the cards. This is the perfect time for you to just soar high. You are ready to soar high. So make that decision. You will be backed by the universe. आपका कोई काम अब नहीं रुकेगा. You are just on the time to, resolve things for yourself. This is a time for healing. This is a time for getting balance back in your life. हो सकता है 2 months लगे, but this will finally be a very, very big breakthrough for a lot of people who've chosen pile number 2. Victory and success is on the cards. Also, आपके लिए बहुत अच्छा time है for manifesting your dreams, manifesting your plans. So the cards definitely tell you, people who've chosen pile number 2, कि अपनी intentions clear रखिए और इनको बहुत ही ज़्यादा अपनी डिज़ायर को यूनिवर्स में छोड़िए एंड रोज़ उसको अपने लिए मैनिफेस्ट करिए. फोकस अपॉन इट विथ अनवेवरिंग फेथ. याद रखिएगा, अनवेवरिंग फेथ से मेरा मतलब है, जो कि आर्ट ऑफ टैरो डेक में भी निकला है, कि जो आपने डिसीजन बना लिया, जो आपकी डिज़ायर है, उसको जब आप सोचते हैं, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट विथ फॉर इट to happen without any if and but. Do not doubt yourself. Do not doubt the universe's plan. Tell yourself कि जो decision मैंने अपने लिए लिया है, this will be the perfect one. The universe is with me. I will not have a fall. This will be guided by the divine plan. And I can tell you, completion is on the cards for people who've chosen pile number 2. आपके सारे काम बन रहे हैं, आपको मदद मिल रही है. And balance is coming in your life. Both the cards are telling me कि इतना balanced आपका सब कुछ हो जाएगा. This is a universal plan. This is guided by the universe's plan. And prosperity है, abundance है, career में gains है, job, finances, love life, all is going to be taken care of by the universe. आप बस अपनी clear intentions रखिएगा and bring that element of, pushing yourself. Do not lose hope. थोड़ा सा टाइम है, स्ट्रगल है. सो what happens is, जब स्ट्रगल दिखती है, हम अपनी आपसे सवाल करने लग जाते हैं that maybe this is not the right thing, maybe this is not happening, मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, maybe I'm just wasting time. Don't have these kind of things coming in your mind. Just believe that it's taking time, it's going slow, but slow and steady, I will win the race. And yes, the world is yours. For people who've chosen pile number 2, I can say it with a lot of conviction कि अगले कुछ few months में आप देखेंगे that things are getting made for you the way you wanted them to. It took time, but this was the right thing, and this is the right time for you to spread your wings and soar high. So with that, I take your leave. People who've chosen pile number 2, all the very best for your situation, all the very best for your relationship, career, financial growth, a wonderful time coming your way. So take that with a big yes. And I'll see you at in the next session. Thanks a lot for joining today. Please do like, share and subscribe my channel, and I'll see you soon in the next session. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने pile number 3 choose करी थी, the Mystic Monday Tarot deck. That's the Mystic Monday Tarot deck. What do we have in store for you? Whether it is a yes or it is a no in your situation. What is going on? What is the guidance for you? आइए देखते हैं. People who've chosen pile number 3, what I can see is कि आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हो, शायद अभी आपको उसका रिटर्न नहीं मिला. थोड़ी सी चीज़ें स्टैग्नेंसी से चल रही हैं. द आंसर फॉर यू इन योर सिचुएशन राइट नाउ इज अ नो. सो इफ यू हैव आस्क्ड मी दैट यू एंड योर पर्सन, हैव यू फिनिश्ड, या इज योर पर्सन gone forever, then it's a no. But if also you've asked me that whether this relationship will work out, whether you will get the results from this effort that you're putting in, then no, it's not a no for you. Also, आपके लिए चीज़ें थोड़ी delayed हैं. Celebration is there on the cards. Things will take time to happen, but it's going to take some time. At this point in time, your answer is a no. Also, अगर आपने ये पूछा है that whether you should change your job, is it the right time, then no, this is not the right time as per this situation. No, do not give up. So अगर आपके अभी काम नहीं बन रहे आपकी जॉब में और आप सोच रहे हो मुझे ये जॉब छोड़नी है, the cards are saying no, things will turn better for you in this same job only. You should not leave it. Same with the person.
if you're with someone and things are not working out, और आपने ये पूछा है, is this the end of my relationship? No, it's not. Things are not working out, things are going slow, but it's going to get fine. Is there a three-party situation in your relationship? No, there's no three-party situation. You need to put in more effort. Maybe you and your person have lost touch, maybe you've lost contact, but keep putting in the effort and things will get better for you in the next 2.5 months. I do see you being guided by the universe. अभी आप बहुत ज़्यादा exhausted हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा exhausted हो जाओ effort डाल के. But abundance and prosperity is on the cards for people who've chosen pile number 3. You need to wait. This is not the right time for things to happen. This is a time of struggle. This is a time of dullness. Basically हो कुछ नहीं रहा है अभी. चीज़ें रुकी हुई हैं. And that's what is troubling people who've chosen pile number 3. आपको रुकावटों से, आपको डलनेस से प्रॉब्लम हो रही है. It's not that there's an issue, but क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, that's the issue of you being really upset. Is your person having an affair with someone? Is your person not being honest to you? It depends आपने क्या question frame किया है. And every time I have said that you need to really frame your questions well when you ask yes or no questions. But let me tell you that this is a time of your inner guidance, inner intuition telling you the best for you. So just जो आपके intuition आपको कह रही है ना, act upon that. Do not delay anything, act upon that. If your intuition is telling you that this person is not the right person for you, just act on it. See the scenario of your relationship and move on. If you've asked me, is this health problem a really serious one? Then no, it's not. But if you've asked me, can I neglect this problem? Will it get all right on its own? Then no. You need to act upon it. You need to listen to your body. Maybe it's not that serious, but yes, you need to show someone. So yes, you will get the help. Things will happen for you, but it's going to take time. Is there somebody cheating on me? No, nobody is cheating on you. Maybe कोई और situation होगी जहाँ आपको negativity आ रही है, but nobody is cheating on you. और अगर आपको अभी भी लगता है after seeing the cards that there is something, then listen to your intuition and act upon it. Take leadership. Find out why you are feeling so. Find out what could be the other hidden agenda which you are not being able to see. So you need to renew your energy. You need to, renew your faith in the universe. Victory is on the cards for people who've chosen pile number 1, pile number 3, provided you get back the faith. शायद आपका faith खत्म हो रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत slowly आपके लिए चल रही हैं. और काफ़ी लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि नेगेटिविटी काफ़ी चल रही है आपके लिए. अगर आपने मुझसे ये पूछा है दैट इज समबडी ट्राइंग टू डू ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ऑन यू, बिकॉज यहाँ पर ये भी एनर्जी है. मे बी सम ऑफ यू आर फीलिंग दैट देर इज एन अकल्ट practice or something like a negative practice going on, then there is no such thing going on. Please don't have these kind of thoughts. Negativity है, हो सकता है नज़र का issue हो, but you can act upon it without delaying. You can take measures to remove the negativity from your life. अगर confused हो किसी बात को लेकर के, then think about what is the confusion, why it's not getting solved. But what right now you need to do is कि आपको अपने decisions लेने की ज़रूरत है. Things for you are hanging in between. You need to take decisions, you need to take action, you need to act upon things very fast. But the answer for your situation at this point in time is a no for people who've chosen pile number 3. अगर आपने ये पूछा है, is this partnership going to work out? Then no. It could be a business partnership. Is this person worth trusting in the partnership? Then no, this person is not worth trusting. So again, I will say it depends a lot on आपने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया था. बात सेम ही है. Is my person going to come back? Yes, your person is not coming back. But is my relationship with my person finished? No, it's not finished. So you have to think how the question was framed, and that's the way you will get your answer. So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 3. And let me know in the comments and feedback whether you got your answers, whether it was beneficial or not beneficial. Keep watching the channel, keep watching my space for more such readings, for live sessions. I'll be coming back with more such readings for you. Let me know if you have any personal, suggestions for questions that I can make your general readings for. I'll be happy to make so for you. And I'll see you next time in the next session. Till then, take care.